Hello everyone. Today I'm going to revise all the things that I have taught you till now. So इस वीडियो में आपको ध्यान से देखना है because I'm going to do the revision part and with the help of this video you are going to revise. So pay attention to whatever I'm saying. First we are going to talk about simple present tense. हमने ये किया था. So in simple present tense we'll see the uses. In uses, we see that we use it for general information, we use it for habitual routine, instructions, right? To describe about something, or for general truth, or universal truths, for future constructions. In that case, we use simple present tense. So, what is the general information? Like the moon goes around the earth. This is a kind of universal truth. Animals have instincts. Okay, how you form simple present tense? It's the subject plus verb plus object. Depends on the subject, will change our verb. It would be V1 or V5. It is going to depend on the subject. So if the subject is in the third form singular, we'll add es to the verb. For example, if it's she, he, it, or any singular name, then we are going to add es. I watch TV every day. So I watch. Watch is V1 form. Verb ka pehla form. He watches TV every day. So it's the V5 form. He watches TV every day. She hota. Then also we have used watches. We hota to watch. You watch. They watch. I watch. Nikita and Kajal watch. But only Nikita then watches. Only Kajal watches TV every day. Clear? So this is the formation of simple present tense. Frequency. So frequency is how often you do something. Is it for every hour, every day, every week, every month, etc. Once a day, once a week. It is going to tell you about the frequency of your work. Always, usually, often, sometimes, rarely, seldom, hardly, ever, never, once, twice, etc. These are all time expressions. You are going to denote the time about something that you are doing. For example, I get up early in the morning every day. I get up around 5 o'clock every week or on weekdays. But on weekend, I wake up around 8 a.m. So this is all about like every weekend, I wake up around 8 a.m. Otherwise, I wake up on weekdays, I wake up around 5 a.m. Okay. So this is all about your frequency. You are saying about your every day, every weekend, or on weekdays, like this. So I always go to gym in the morning. So I usually go to gym in the morning. So we are denoting about the frequency. Is it 100%, 19%, or 20%, or 50%, or what is it? So you have to learn about the frequency to use in simple present tense. This is all about verb when we are going to use third person singular form. So in third person singular form, we are going to add s, es, or ies. It depends on the word. If it's drink, we are going to add s, drinks, read, read, here also s, reads, love, add s, loves, go, add es, goes, watch, add es, watches. So I have already taught you in detail. So for example, it's cry, cry, cry. So at the end you are having y. So in cry you are going to omit the y and you are going to add ies. So it will become cries. Try, tries. Okay. So this is the format. Next is, in the same way, I'm going to just give you some snippet of all the things. Right now, at the moment, today, right now, now, कोई भी चीज जो अभी हो रही है. Right now, I'm teaching you all. So, I'm teaching means that right now I'm teaching. मैं अभी पढ़ा रही हूँ. मैं पढ़ाती हूँ. I teach. अभी पढ़ा रही हूँ. I'm teaching. मैं एक teacher हूँ. I am a teacher. मैं पढ़ाती हूँ. I teach. So now moment के लिए right now at the moment today we use ing form with verb. Okay, verb में मेरा ing add हो जाएगा. Then it is going to be continuous. ठीक है, continuous में हम ing add करते हैं. That is रहा, रही. Okay, it depends on present simple or sorry, it depends on present, past or future.
So we are sleeping. I am dancing. She is watching TV. He isn't crying. He is not crying. He isn't crying. They aren't learning. They are not learning. They aren't learning. I am not eating. I am not eating. We cannot say I amn't. Okay, here you have to say I am not eating. You are not eating. You aren't eating. Okay, she is not eating. She isn't eating. They aren't learning. He isn't crying. She is watching TV. I am dancing. We are sleeping. We are learning. They are teaching. We are going to the market. So this is all about continuous. हम जा रहे हैं. ing. See the pattern. ing, 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 ing. So it's all about raha, rahi. When you're talking about something that is happening right now at the moment, you're going to add ing to the verb. Now, अगर हम simple present की बात करें तो this is all about simple present tense. And जो इस side का है ना, this one is continuous. Okay. और this side वाला simple present. So दोनों present हैं, but one side is about simple present tense, another side is about continuous tense. So continuous में मेरे verb के साथ ing लगता है, and simple में verb का पहला form या फिर verb का fifth form. Fifth form क्या होता है? When we add s, es और ies to the third form of third person singular. He, she, it, any singular name. ठीक है, वहां पे हम V5 use करते हैं. Otherwise जितने भी ये आपके I, we, they, you, right, any plural name, जब ऐसा कुछ हो, then we are going to add V1. So this is about simple present tense. तो simple present tense में हमारी frequency में हम क्या use करते हैं? Always, every day, on Thursdays, मतलब हर Thursday को. Sometimes, usually, at weekends, every day, every week, normally, seldom, rarely, ऐसा. So I play tennis, मैं tennis खेलती हूँ. You work in an office, तुम ऑफिस में काम करते हो. He dances, वो डांस करता है. They go swimming, so वे स्विमिंग करते हैं. I don't, they go swimming, वो स्विमिंग जाते हैं. I don't eat spinach, मैं spinach नहीं खाती हूँ. You don't learn, तुम learn नहीं करते हो. You do not learn. I do not eat spinach. I do not, I don't, you don't. यहाँ पे आपका ऐसा होगा कि आप क्या नहीं करते हो, उसके लिए आपको do और does लगाना होता है, depend on the subject. तो अगर आपका you, we, they, I, plural name, ठीक है, ये सारे हैं तो आप लगाओगे do not. He, she, it और any singular name है तो you are going to add does not. Okay. वैसे ही आपका क्वेश्चन के फॉर्म में does और do पहले आएगा, सब्जेक्ट बाद में आएगा, एंड देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस वैसे बनेंगे. She does not watch TV. अब यहाँ पे watch TV है, ठीक है, यहाँ पे does not watches नहीं हो सकता, V5 नहीं लगाना क्योंकि ऑलरेडी V5 फॉर्म does आ चुका है. So she does not watch TV. बट अगर मैं सिंपल में पॉजिटिव सेंटेंस बोलूं तो she watches TV. Okay. You do not learn, she doesn't learn. I do not eat spinach, she doesn't eat spinach. Okay, they go swimming, they do not go swimming. She does not go swimming, but she goes swimming. समझ में आया डिफरेंस? es कहाँ लग रहा? So this is about continuous present, present में, और जब simple present बात करते हैं तब. Now see the pattern of verbs ending in o. ऐसे ऐसे verbs जो o, double s, sh, ch, x, z, e से end होते हैं ना, उसमें हम es add करते हैं. So we have to add es to all these words ending with o, sh, double s, ch, x, z. For example, I go, she goes. I do, he does. I wash, he washes. She washes. Okay, she washes. It washes. Okay. यहाँ पे अगर निकिता होता तो निकिता washes. Everyone washes. Indefinite. I kiss, she kisses. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? she के साथ क्या आ जा रहा है आपको किस में? es ऐड हो गया. I miss, he misses. Nikita misses. I watch, she watches. I catch, she catches. I fix, she fixes. I relax, he relaxes. So see the pattern. He, she, it or any singular name. कोई भी इंसान. आपका भाई हो तो my brother watches, my sister watches, my mother watches TV, my father watches TV. Okay. But if I'll say that your father then also watches, क्योंकि singular है ना, एक person के बारे में बात हो रही है. Okay. Otherwise I, you, we, they, इन सबके साथ आपका V1 आएगा. Kiss, miss, watch, fix, ऐसा. Now present simple tense में he, she, it third person singular होते हैं. Okay. So in he, she, it third person singular, I read, she reads. I walk, he walks.
वर्ब में एस ऐड कब होता है वो दिखाया जा रहा है। वर्ब्स एंडिंग इन अ वोवेल ए ई आई ओ यू प्लस वाई ऐसे वर्ब्स जिसमें ए आई ओ यू वॉवेल हो और उसके साथ वाई हो तो वहां पे हम सिर्फ एस ही ऐड करते हैं। अदरवाइज जैसे क्राई है सो दिस इज कॉन्सोनेंट, ये क्राइज हो जाएगा। एंड अगर प्ले है तो यहाँ पे आप प्लेज नहीं करोगे, प्लेज हो जाएगा, एस लगेगा। क्यों? क्योंकि ये वॉवेल आ रहा है, पहले ए वॉवेल है, ए भी वॉवेल है, से सेज, शी शी सेज, आई से, आई प्ले, ही प्लेज। ओके, दिस इज अबाउट एस का ऐड करते हैं। नाउ बट वर्ब्स एंडिंग इन अ कॉन्सोनेंट, अभी मैंने बताया जो कॉन्सोनेंट वाले वर्ब होते हैं, ठीक है। तो ऐसे वर्ब जिसमें एंड में कॉन्सोनेंट है उसके बाद वाई है तो वहां पे आई ई एस ऐड हो जाएगा। स्टडीज, आई फ्लाई, एल क्या है मेरा? कॉन्सोनेंट, आई ई एस ऐड हो गया, वाई हटा के आई, इट फ्लाइज। ही स्टडीज, शी स्टडीज, निकिता स्टडीज, इट फ्लाइज, शी क्राइज, ही क्राइज, इट क्राइज। ओके, दिस इज द यूज ऑफ एस ई एस आई ई एस। ना प्रेजेंट सिंपल में हमने क्या देखा? दो तरीके का होता है। टू बी फॉर्म इज नथिंग अबाउट इज एम आर, और वर्ब्स में हम यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट में जब हम वर्ब यूज करते हैं, ठीक है, जो मेन वर्ब है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। जब पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है तो सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस प्रेडिकेट एंड सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्रेडिकेट। जब निगेटिव में बनाना होता है, क्वेश्चन बनाना है तो एम इज आर पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट बाद में, देन प्रेडिकेट, फिर क्वेश्चन मार्क भी आएगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट में जब हम पॉजिटिव बनाते हैं तो ये फॉर्म आता है, निगेटिव बनाते हैं तो डू नॉट और डज नॉट आएगा, प्लस वर्ब देन ऑब्जेक्ट। सो पहले सब्जेक्ट फिर डू नॉट और डज नॉट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। डू और डज पहले, तब सब्जेक्ट, तब वर्ब, तब ऑब्जेक्ट। डू यू गो टू मार्केट, डू ही स्टडी। ओके, तो यहाँ पे सॉरी डू ही गलत है, डज ही स्टडी। नाउ सी द नेक्स्ट थिंग, कैसे सेंटेंस बन रहा है। यूजेस में क्या है? जब हम एक्सप्रेस करते हैं जनरल ट्रुथ, जब जनरल ट्रुथ एक्सप्रेस करते हैं तो द सन राइजेस इन द ईस्ट, हैबिट्स के लिए आई प्ले बैडमिंटन एवरी ट्यूसडे, फ्यूचर टाइम टेबल्स आर ट्रेन, लीव्स एट 9 AM, फ्यूचर आफ्टर व्हेन, अंटिल, ये फ्यूचर कंस्ट्रक्शंस है। आई वोंट गो आउट अंटिल इट स्टॉप्स रेनिंग, मैं बाहर तब तक नहीं जाऊंगी जब तक कि बारिश खत्म नहीं हो जाती, स्टॉप नहीं हो जाती है। सो इट स्टॉप्स रेनिंग क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस, बट दिस इज अबाउट योर फ्यूचर कंस्ट्रक्शंस यूजिंग until, और यहाँ पे आई वॉन्ट यूज किया मैंने, फ्यूचर यूज किया। परमानेंट सिचुएशन में ही वर्क्स इन अ बैंक। ओके, सो दिस इज समथिंग जो कि परमानेंट है, चेंज नहीं हो रहा। पर न्यूज़पेपर हेडलाइंस में आप देखोगे मैन एंटर्स स्पेस, तो फ्यूचर हेडलाइंस, न्यूज़पेपर हेडलाइंस जो होती हैं उसमें भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज ज्यादा देखोगे। With non-progressive, I believe that you are innocent. When telling stories, suddenly the window opens and a masked man enters. तो जब हम स्टोरी बताते हैं ना तब भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। Suddenly the door opens and she comes inside. अचानक से डोर खुलती है और वो अंदर आती है, इस टाइप से। For giving directions and instructions में भी हमने देखा था, first of all you break the eggs and whisk with sugar, or pour water into the pan and then cut the Maggie packet, put it in the bowl, boil it, and then put masala, stir it, like that. Present simple versus continuous meaning मैंने बता दिया है कि सिंपल और कंटिन्यूअस में क्या चेंज होता है, डिफरेंस क्या होती है। हैबिट्स में रेगुलर और रिपीटेड एक्शन, जब हम हैबिट्स की बात करते हैं, रेगुलर रिपीटेड एक्शन जो कि हैबिट है आपका। पे अटेंशन, आई एम टॉकिंग अबाउट यूजेस, यूजेस मतलब कहाँ कहाँ यूज हो सकता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो हैबिट में, रेगुलर और रिपीटेड एक्शंस में, I wash my hair every day. So I wash my hair every day. He usually gets up early in the morning, or he usually gets up very early. I usually get up early. She usually gets up every early. She goes to market in the evening. Okay. So यहाँ पे पैटर्न देखो ना, एक्शन इन प्रोग्रेस नाउ। अब ऐसा एक्शन जो अभी चल रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है। आई कांट वॉक, मैं वॉक नहीं कर सकता हूँ। आई एम ब्रशिंग माई टीथ, क्यों वॉक नहीं कर सकता? बिकॉज आई एम ब्रशिंग माई टीथ, मैं ब्रश कर रहा हूँ इसलिए मैं वॉक नहीं कर सकता। बट अगर हमको इसको सिंपल प्रेजेंट में बोलना है तो हाउ वुड आई से दैट आई ब्रश माई टीथ एवरी मॉर्निंग, आफ्टर दैट आई टेक बाथ। सो मैं हर मॉर्निंग ब्रश करता हूँ एंड देन मैं बाथ लेता हूँ। बट यहाँ मैं कह रही हूँ कि मैं नहीं चल सकती। क्यों नहीं चल सकते? बिकॉज आई एम ब्रशिंग माई टीथ, आई एम ब्रशिंग माई टीथ। ब्रशिंग माई टीथ के साथ वो नहीं आ रहा है नाउ, बट नाउ छुपा हुआ है दैट आई एम ब्रशिंग माई टीथ राइट नाउ, अभी मैं ब्रश कर रही हूँ। ओके, तो ही कांट टॉक नाउ, वो बात नहीं कर सकता अभी। व्हाई? बिकॉज ही इज हैविंग अ शावर, वो शावर ले रहा है, दैट्स व्हाई ही कैन नॉट टॉक राइट नाउ। ओके, बट
ही टेक्स शार, मतलब वो शार लेता है. Facts, permanent situations or states. So second use is about facts, permanent situations or states. तो जब हम facts की बात करते हैं, permanent situation, states की बात करते हैं, तो हम कैसा sentence बनाएंगे? I have one brother. मेरे पास एक भाई है. He lives in Paris. वो पेरिस में रहता है. Water boils at 100 degrees. Water 100 degrees में boil होती है. Okay. So this is about facts, permanent situations or states. जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो एक्शंस इन प्रोग्रेस अराउंड नाउ, ऐसी चीज जो अभी प्रोग्रेस चल रही है, हो रही है. आई एम रीडिंग अ न्यू बुक. आई लव इट. मैं अभी बुक रीड कर रही हूँ. आई एम रीडिंग अ न्यू बुक. अब ये जरूरी नहीं है मैं अभी कर रही हूँ, बट हाँ, आई एम रीडिंग अ न्यू बुक, मैं एक बुक पढ़ रही हूँ. एंड आई लव इट, मैं उसे पसंद करती हूँ. ही इज ट्रेनिंग हार्ड दीज डेज. ओके, ही इज ट्रेनिंग हार्ड दीज डेज. सो अभी के बारे में बात हो रहा है, मतलब कि अभी इन द सेंस कि अभी तुरंत नहीं, बट हाँ, ही इज ट्रेनिंग हार्ड दीज डेज, मतलब कि अभी के टाइम में वो बहुत ही ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग कर रहा है. ठीक है. विद स्टेटिव वर्ब्स, हमने देखा था पहले, स्टेटिव और डायनेमिक. स्टेटिव वर्ब्स होते हैं ऐसे वर्ब्स जो कि स्टेटिव होते हैं, कि वो चेंज नहीं होते जल्दी. डायनेमिक जो कि चेंज होते हैं. तो स्टेटिव वर्ब्स में आ गया आपका गिव मी द मनी. मुझे मनी दो, आई नीड इट नाउ. मुझे जरूरत है, गिव मी द मनी, आई नीड इट नाउ. व्हाट हैपेंड? यू लुक सैड. क्या हो गया? आप सैड दिख रहे हो. लाइक हियर इज द यू लुक सैड. सो यू लुक सैड डजंट मीन कि लाइक यहाँ पे आप लुकिंग सैड लगाओगे कि हाँ वो सैड दिख रहा है. सो इट्स द वे ऑफ सेइंग दैट यू लुक सैड. तो यहाँ पे स्टेटिव वर्ब में हम सिंपल V1 यूज कर रहे हैं. सिग्नल वर्ड्स में क्या होता है? नाउ, एट द मोमेंट, दीज डेज, दिस वीक, दिस मंथ, एटसेट्रा. सो दिस इज अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपको ये याद रखना है. नाउ, एट द मोमेंट, दीज डेज, दिस वीक, दिस मंथ, एटसेट्रा. सिग्नल वर्ड्स में आपका प्रेजेंट सिंपल में क्या याद रखना है? ऑलवेज, नेवर, ऑफन, समटाइम्स, एवरी डे, वंस अ मंथ, ट्वाइस अ वीक, एटसेट्रा. सो ये जो सिग्नल वर्ड्स है ना, इसको ध्यान में रखना है. अगर मुझे ये वर्ड्स दिखेंगे, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस. ऑलवेज, नेवर, ऑफन, समटाइम्स, एवरी डे, वंस अ मंथ, ट्वाइस अ वीक, एटसेट्रा. But when we see the word like now, at the moment, these days, this week, this month, etc., that means we're talking about present continuous. Okay, I do it regularly. I drink tea. I do yoga. So I'm doing it regularly, regular basis. This is my habit. Repeated actions that I'm doing on the daily basis. I drink tea. I drink tea every day, every morning. I do yoga. I do yoga every morning, every weekend, every weekdays. I am doing it now means like मैं अभी कर रही हूँ. I'm drinking tea. So if I'm drinking water right now, I would say that, okay, I'm drinking water. But I drink water, मैं पानी पीती हूँ. I'm drinking water, मैं पानी पी रही हूँ. I do yoga, मैं योगा करती हूँ. I am doing yoga, मैं योगा कर रही हूँ. Okay. Verbs of the senses. So verbs of the senses में क्या आ रहा है आपका? Hear, सुनना, see, देखना, smell, look. Look means भी देखना होता है, see means भी देखना होता है. ठीक है. But I will tell you the meaning and difference about it later. Seem, it seem मतलब ऐसा मुझे आभास हो रहा है कि ऐसा होगा या फिर ऐसा कुछ. तो it seems that something is going to happen. ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है that कुछ तो होने वाला है. Sound, opinion में क्या होता है आपका? Believe, consider, like, love, hate, prefer, think, etc. ये आपका opinion होता है. Verbs of the senses, जो कि sense आप feel कर सकते हो, उसमें आप क्या करोगे? Hear करोगे, see, smell, look, seem, sound. पोजेशन क्या होता है? जो चीज आप पोजेस करते हो, जो चीज आपकी होती है. जैसे हैव, ओन, बिलोंग, इट बिलोंग्स टू मी. आई हैव माई ओन हाउस. आई एम द ओनर ऑफ दिस हाउस. आई ओन इट. ठीक है. सो दिस इज अबाउट पोजेशन, कि ये मेरा है, ऐसा बताना. ऑल्सो बी, नीड, मीन, रिमेम्बर, वॉन्ट, एटसेट्रा. So these are some words related to this. Now next we are going to see again present simple versus present continuous में कुछ revision. इसमें हम देखेंगे जनरल ट्रुथ में क्या होता है. इट रेयरली रेन्स इन द डेजर्ट. यू प्ले चेस विद 32 पीसेस. शी प्लेज चेस विद 32 पीसेस. इट रेयरली रेन्स इन द डेजर्ट. ये था सिंपल प्रेजेंट टेंस. कंटीन्यूअस में क्या हो रहा है? एक्शंस हैपनिंग नाउ. शी इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर अपस्टेयर्स. अपस्टेयर्स ऊपर बैठ करके वो न्यूज़पेपर रीड कर रही है. आई एम बिजी, मैं बिजी हूँ. आई एम डूइंग माई होमवर्क. क्यों बिजी हूँ? बिकॉज मैं अपनी होमवर्क कर रही हूँ. प्रेजेंट हैबिट्स में क्या बात करते हैं हम? जो कि आप प्रेजेंट हैबिट्स है आपका, जो हैबिट है उसमें हम सिंपल प्रेजेंट यूज करते हैं. So the birds return to the island every morning. This is island, okay? So the birds return to the island every morning. See the green word. This is verb, return. The birds है इसलिए return है. एक bird होती तो returns हो जाता. Because there are two birds. The birds return, bird returns. She returns,
You return. They return. We return. I return. Nikita and Kajal return. But if Nikita then returns, Kajal returns. Masha goes to dance club every Thursday. Masha goes where? Masha goes to dance club every Thursday. So goes के बाद to आना है and then dance club. He goes to dance club every Tuesday. But you होता तो go to dance club. ना annoying habits जो होता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस से यूज करते हैं प्लस ऑलवेज लगाते हैं हम जो कि annoying habits है जो कि कोई हमेशा करता है यू आर ऑलवेज फॉरगेटिंग टू पे द बिल्स तुम हमेशा भूल जाते हो बिल पे करना ओके सो यू आर ऑलवेज फॉरगेटिंग टू पे बिल्स सो तुम हमेशा भूल रहे हो बिल पे करना इज ऑलवेज सिंगिंग इन द शार वो हमेशा शार में सिंग कर रहा है ही इज ऑलवेज सिंगिंग इन द शार ना टाइम टेबल इवेंट्स में कैसे होगा आपका टाइम टेबल इवेंट्स क्या होता है आपका जब आप टाइम टेबल पर्टिकुलर इवेंट्स अब फिक्स्ड है फिक्स्ड अरेंजमेंट्स है फिक्स्ड इवेंट्स हो रहा है द प्लेन टू लंदन टेक्स ऑफ एट 6:30 AM तो 6:30 AM एग्जैक्टली 6:30 AM में जो प्लेन है लंदन के लिए जो रवाना होने वाली है इट्स गोइंग टू टेक्स ऑफ एट 6:30 AM The drama club meets every other week at 7:30 PM. So the drama club meets every other week at 7:30 PM. यहाँ पे क्या हो रहा है आपका meets, takes off, okay? Because of this subject, the plane to London takes off at 6:30 AM. The drama club meets every other week at 7:30 AM or PM. Or my class starts at 9 AM every morning. Future arrangements हम ING लगाते हैं, same ही चीज type का. She's getting married on 3rd November. So she's getting married on 3rd November. ठीक है वो शादी करने जा रही है मैरिड होने जा रही है on 3rd November. अभी हुई नहीं है बट जा रही है. We are leaving at 3 this afternoon. हम लोग 3 बजे this afternoon आज के आफ्टरनून लीव कर रहे हैं. परमानेंट स्टेट्स होता है तब सिंपल प्रेजेंट यूज करते हैं. He works at a hotel. वो कहाँ वर्क करता है होटल में. I like the new James Bond film. ये जेम्स बॉन्ड की न्यू फिल्म लाइक मुझे अच्छी लगती है. I like the new James Bond film. He works at a hotel. You work at a hotel. I work at a hotel. He works at a hotel. She works at a hotel, right? Temporary states जब होता है तब क्या करते हो? She's working at the museum until the end of this month. इस मंथ के एंड तक she is working at the museum. वो वर्किंग म्यूजियम में वर्क कर रही है कब तक? Until the end of this month. इस मंथ के एंड तक. Adverbs क्या क्या यूज होंगे आपके? In simple present tense, you are going to use adverbs like always, usually, often, sometimes, rarely, never. Phrases कैसे use होंगे आपके? Every week, Monday, month, year, once, twice, 3 times a week, like this. So you have to remember all these adverbs and phrases. Always, usually, often, sometimes, rarely, never. Phrases में every week, Monday, month, year, once, twice, 3 times a week. Now phrases, in phrases, what you're gonna do is in phrases, we are going to talk about now, right now, at the moment, today, this week, this month, this year. So now, right now, at the moment, today, this week, this month, this year. So this is about phrases, but we are going to use in continuous tense. It's all about present simple and continuous. ठीक है? Now present simple के form में हम कैसे देखेंगे? Affirmative में क्या होता है? I walk. Negative, I don't walk. Interrogative, do I walk? You walk. You don't walk. Do you walk? He walks. He doesn't walk. Does he walk? See, he walks आया. He does not walk आया. Walks नहीं आया. Does he walk है? Walks नहीं है. So walks जो ये SESIS लग रहा है वो मेरा सिर्फ positive sentence में लग रहा है. Negative sentence में do not और does not and interrogative में do और does मेरा पहले आ जा रहा है. But यहाँ पे SESIS का concept नहीं है. इसमें भी नहीं है. Negative में भी नहीं है. Because we are using do or does. Okay? और यहाँ पे positive में क्या है? मेरा SESIS आएगा. जैसे it walks, it does not walk. Does it walk? We walk, we do not walk. Do we walk? You walk, you do not walk. Do we walk? Do you walk? They walk, they do not walk. Do they walk? अब आपको क्या करना है? Walk की जगह पे कुछ और verb लगाओ and then form the sentence of your own. Okay? You know the structure now. Subject plus verb plus object. Subject plus do not or does not plus object. I mean do not or does not plus object. Interrogative में do or does plus subject plus verb plus object. Short answers कैसे बनेंगे आपके? Yes, I. Yes, you, we, they do. Yes, he or she does. Okay. Yes, I do. Yes, you do. Yes, we do. Yes, they do. Okay. और third person में yes, he does. Yes, she does. Yes, it does. Negative में कैसे बनेगा? No, I don't. No, you don't. No, they don't. No, we don't.
नो ही डजंट, नो शी डजंट, नो इट डजंट। ठीक है, ये हो गया मेरा क्वेश्चन टैग टाइप का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ओके, नाउ विल सी द नेक्स्ट। थर्ड पर्सन सिंगुलर में हमारा क्या होता है? सी इन थर्ड पर्सन सिंगुलर we add s to the verb to the form the third person singular। अभी मैंने ये ऑलरेडी करा चुका है, so I'm just reading it। I drink, he drinks, I run, he runs, but we add es to sh, ch, x, o, double s, like this। I watch, he watches, and go, goes, like that। Catch, catches, with verbs ending in consonant y। अगर consonant है verb मेरा alphabet and then y है, then we are going to cut the y and I have to add ies। ओके, अगर प्ले होता तो प्ले में क्या है, मेरा ए वॉवेल है तो यहाँ पे प्लेज हो जाएगा। विद वर्ब्स एंडिंग इन वॉवेल प्लस वाई, वहां पे ऐसा आ जाएगा प्लेज। ठीक है, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द रूल्स। यूज कहाँ पे प्रेजेंट सिंपल का हमने ऑलरेडी कर रखा है हैबिट्स एक्शंस में, दैट वी डू रेगुलरली। ही विजिट्स हिज फ्रेंड्स एवरी संडे, शी गोज टू स्कूल बाय बस, यू गो टू स्कूल बाय बस, शी गोज टू स्कूल बाय बस। ठीक है, अब यहाँ पे ये नहीं पूछना कि शी गोज क्यों हो रहा है, यू गो क्यों हो रहा है, बिकॉज दिस इज इट इज। फॉर जनरल ट्रूथ द सन राइजेस इन द ईस्ट, the sun rises, एक ही sun है ना, तो वो rises हो जाएगा थर्ड पर्सन। For permanent situation, he lives in Athens, I live in India, you live in India, but she lives in India। Okay, all right, next is again related to present simple and continuous। I'm just doing it for the sake of revising and to make you understand about the uses। Now see again, positive जो sentence हम बनाते हैं तो कैसे बोलते हैं हम positive sentence में? I work, you work, we work, they work, but he or she or it होगा तो works, he works, she works, it works। I am working, अब यहाँ पे I work मैं काम करता हूँ, I am working मैं काम कर रहा हूँ। You work, तुम काम करते हो, you are working, तुम काम कर रहे हो, हम काम कर रहे हैं, वे काम कर रहे हैं। He or she or it is working। I के साथ am, you, we, they के साथ are, he, she, it के साथ is working। I, you, we, they don't work, do not work। I के साथ do not, you के साथ do not, we के साथ do not, they के साथ do not work। He or she or it के साथ does not work। I am not working, I'm not working। You aren't working, we aren't working, they aren't working। He isn't working, she isn't working, it isn't working। Do I work? Do they work? Do you work? Do we work? Does she work? Does he work? Does it work? Am I working? Are you working? Are we working? Are they working? Is he working? Is she working? Is it working? So this is about question form। Now let's see the short answer। Short answer में कैसे बोलेंगे हम? Yes, I do. Yes, they do. Yes, we do. Yes, you do. Yes, he does. Yes, she does. Yes, it does। No, I don't. No, you don't। No, we don't। No, they don't। No, he doesn't। No, she doesn't। No, it doesn't। Now short answer में जब हम ing वाले फॉर्म में short answer करते हैं तो how we would say yes I am, yes you are, yes we are, yes they are, yes she is, yes he is, yes it is। No, I'm not। No, I'm not। No, you aren't। No, we aren't, they aren't। No, he isn't। No, she isn't। No, it isn't। Okay, so see the difference between simple present and present continuous। Now let's come to the adverbs of frequency। Adverbs of frequency में you can see this triangle 100%, 90%, 80%, 70%, 60%, 50%, 30%, 10%, 0%। 0% में क्या है? Never। 100% में क्या है? Always। जो चीज कभी नहीं कर सकते हो 0%, जो चीज हमेशा कर सकते हो always। I always wake up early, usually 90%। I usually take a nap after lunch। तो lunch के बाद मैं usually जो है nap लेता हूँ। नैप मीन्स कि झपकी मारना, थोड़ी देर के लिए सो जाना, इट्स नैप। सोना इज लाइक प्रॉपर सोना, 8 घंटे 7 घंटे की स्लीप ले रहे हैं, रात में 10 बजे सोने जा रहे हैं, दैट इज सोना, दैट इज स्लीपिंग। बट टू व्हेन वी आर सेइंग दैट हाँ मैं झपकी लेती हूँ या फिर खाने के बाद थोड़ी देर सोती हूँ, दैट इज नैप, एनएपी नैप। I usually take a nap after lunch। Often, he often arrives late for meetings। So he often arrives late for meeting। Often arrives, ये often मेरा क्या adverbs of frequency है, but verb क्या है? Arrives है। You often arrive हो जाएगा, but he often arrives late for meetings। I frequently use my phone for work। Frequently is for 70%, 60% for sometimes। Sometimes is like कभी कभी। So I think यहाँ पे 50 होना चाहिए, but okay। I sometimes feel a bit lonely। तो कभी कभी मैं थोड़ा बहुत lonely feel करती हूँ। 50% occasionally, the train occasionally arrives early। So occasionally जो है train early arrive करती है, 50% chance है। Rarely 30%,
is she rarely uses social media. Rarely is like कि बहुत कम chance है that she uses social media. बहुत कम use करती है social media. They hardly ever travel abroad. So hardly ever. So this is the way of saying hardly ever, hardly ever. Okay. Now 0% में never है. He never watch. यहाँ गलत है because यहाँ पे हो जाएगा he never watches horror movies. क्यों? Because he के साथ watches आएगा, es लगेगा. So he never watches horror movies. Okay. All right. Next is वर्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका? सब्जेक्ट प्लस फ्रीक्वेंसी एडवर्ब होगा, देन मेन वर्ब. ही ऑफन सिंग्स, ये मेन वर्ब है मेरा, सिंग्स. ही इज रेयरली लेट, तो ही इज रेयरली लेट. सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब हो रहा है, ये टू बी वर्ब है. ओके, ये मेन वर्ब मेरा क्या है? सिंग्स. और टू बी वर्ब क्या है? इज. तो ही इज रेयरली लेट, वो रेयरली लेट होता है. ऑक्सिलरी वर्ब पहले आएगा. ऑक्सिलरी वर्ब क्या है मेरा? डू डज ऑक्सिलरी वर्ब है. देन सब्जेक्ट आएगा मेरा यू, and then adverbs if we can see often, and then do you often. Okay, now next is adverbs of frequency. Same. So adverbs of frequency क्या होता है? It always tell us how often something takes place either in definite or indefinite terms. तो कोई भी चीज किस कितने टाइम तक या फिर कैसे टेक प्लेस होती है. कभी होती है डेफिनेट, कभी इंडेफिनेट, क्या क्या टर्म है उसका. सो see, it's always cold in the room. It is always cold in the room. I usually get home about 6 o'clock. मैं usually home पहुंचती हूँ 6 बजे के आसपास. She doesn't normally arrive until 10. She doesn't normally arrive until. आज वो 10 बजे पहुंच गई है, but ऐसे generally she doesn't normally arrive until 10. 10 जब तक 10 जब तक नहीं बजता है तब तक वो पहुंचती नहीं है. I don't often drink beer. So I don't often drink beer. मैं often beer drink नहीं करती हूँ, पीती नहीं हूँ. I sometimes think I'm going mad. I sometimes think I'm going mad. कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं पागल होती जा रही हूँ. So I'm going mad. I see him occasionally in town. So I see him occasionally where? In town. I seldom read the newspaper. Seldom is about 10% chances that I read newspaper. We rarely or hardly ever go to concerts. So ये rarely or hardly ever we can use simultaneously, like 5% chances that we rarely go to concerts or we hardly ever go to concerts. We have never been to New York. यहाँ पे जो sentences है ना आपके, it's a mixed sentences. यहाँ पे confuse मत होना because this is all about, like यहाँ पे tenses जो है mix है. यहाँ पे we have भी है, ing भी लगा हुआ है. So it's not about simple present and present continuous only. And next we can see the adverbs of definite frequency. ये indefinite frequency है. Always, usually, doesn't, often, normally, sometimes, occasionally, seldom, rarely, hardly ever, never. अब डेफिनेट फ्रीक्वेंसी में हम क्या देख रहे हैं? डेफिनेट इज लाइक जो कि डेफिनेट है, जो आपको पता है कि ये इसी टाइम होती है, यही फ्रीक्वेंसी है इसकी. तो एडवर्ब्स ऑफ डेफिनेट फ्रीक्वेंसी अकर एट द बिगिनिंग और द एंड ऑफ द सेंटेंस. या तो आपके स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस में आएगा या एंड ऑफ द सेंटेंस में आएगा, बीच में नहीं आएगा. ठीक है. तो एन एडवर्ब दैट डिस्क्राइब्स डेफिनेट फ्रीक्वेंसी इज वन सच एज वीकली, वीकली या फिर एवरी वीक, डेली या फिर एवरी डे, ईयरली या फिर एवरी ईयर, वंस अ मंथ या ट्वाइस अ ईयर, 4 times a day. ठीक है, दिन में 4 बार, एवरी अदर वीक, हर सप्ते, ऐसा मतलब एक सप्ताह छोड़ के हर एवरी अदर वीक. फॉर एग्जाम्पल, द लाइब्रेरी इज ओपन एवरी डे. आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सो आई वेक अप एवरी डे. The library is open every day. I go to gym every day. He visits his grandpa every 2 weeks. Okay, we go to market every 2 weeks. The moon waxes and wanes every month. Now, check out the meaning of waxes and wanes and write it down in the comment section. This medicine is to be taken hourly. So, ये medicine कब लेना है? Taken hourly, hour basis पे. So, subject plus adverb plus main verb. Subject plus auxiliary verb plus adverb plus main verb. Subject plus to be plus adverb. To be में क्या होता है? Is, am, are. और ऑक्सिलरी वर्ब में क्या आ गया आपका? डू और डज. एंड एडवर्ब तो आपने देख चुका है ऊपर में, और मेन वर्ब जो हम यूज करते हैं वो यूज करेंगे. ओके, नाउ अगेन द सिंपल प्रेजेंट टेंस यूजेस रिवीजन में जब हम ट्रेवल की बात करते हैं. ओके, सो व्हेन वी ट्रेवल फॉर वेकेशन और ठीक है, ट्रैवल एंड वेकेशन में वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस. आई ट्रैवल टू डिफरेंट कंट्रीज. मैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज ट्रैवल करती हूँ. क्लासरूम एक्टिविटीज में स्टूडेंट्स आस्क क्वेश्चंस. स्टूडेंट्स आस्क क्वेश्चंस. Scientific facts: the earth revolves around the sun. Weather conditions: the sun shines brightly. So the sun shines brightly. Adverbs of frequency में he often goes to the park with his friends. So वो कहाँ often कहाँ जाता है? Goes to park with his friends. You often go to park with friends. Go to the park with your friends. You होता तो your friends.
We होता तो our friends, he होता तो his friends, she होता तो her friends, okay, they होता तो their friends, they होता तो their friends, it होता तो its friends, we our friends, you your friends, okay, this is the difference. फैमिली रिलेशन है, हर मदर टीचर्स एट अ स्कूल, उसकी मदर कहाँ पर आती है, स्कूल में पढ़ाती है. टाइम एक्सप्रेशन, शी ऑलवेज अराइव्स ऑन टाइम, वो हमेशा टाइम पे पहुंचती है, शी ऑलवेज अराइव्स ऑन टाइम. You always arrive on time, they always arrive on time, he always arrives on time. Likes and dislikes में जब हम बात करते हैं तो कैसे करेंगे, they enjoy listening to music, she enjoys listening to music, but listening के साथ to आएगा. Listening to music doesn't mean कि ये ing जो है continuous हो गया, no, इसमें verb मेरा क्या है, enjoy. स्पोर्ट्स एंड एक्टिविटीज में आई प्ले टेनिस एवरी वीकेंड, मैं हर वीकेंड टेनिस खेलती हूँ, तो वीकेंड में खेलती हूँ, तो दिस इज अबाउट डेफिनेट फ्रीक्वेंसी. वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, आपकी किसी चीज को देखने का क्या परसेप्शन, आपका सोचने का क्या परसेप्शन है. आई सी अ ब्यूटीफुल रेनबो, सो आई सी अ ब्यूटीफुल रेनबो, मैं ब्यूटीफुल रेनबो देखती हूँ. डेली रूटीन्स में आई वेक अप एट 6 AM एवरी डे, आई वेक अप एट 6 AM एवरी डे, शी वेक्स अप, माय फादर वेक्स अप, माय मदर वेक्स अप, my brother wakes up, but I wake up, you wake up, they wake up. If more than one person, then we wake up. Hobbies and interests में I play the guitar in my free time. मैं गिटार कब play करता हूँ, मेरे free time में. So she plays the guitar in free time, in her free time. She plays the guitar in her free time. I play the guitar in my free time. So see the difference. I का my, he का his, she का her, we का our, they का their, their, it का its, ठीक है. you होता तो you का your, alright. I my, he she, he his, she her, we are, it its, they their, you your. तो सेंटेंस को आप चेंज कर दोगे. You play the guitar in your free time, she plays the guitar in her free time, we play the guitar in our free time, you they play the guitar in their free time. ठीक है. Now next we'll see again same चीज, uses always true जो चीज होता है वहां यूज करते हैं. to make for permanent situation में I live in London, short actions now, he takes the ball and scores a goal, okay. He writes the paper and leaves the class. Habits में she plays tennis every Tuesday. Uses कैसे हो जाएगा, twice a month, on Fridays, often, sometimes. Future timetables में our train leaves at 11 AM. Use कैसे करेंगे, this evening, at 10 o'clock, tomorrow. Future in time clauses जैसे until, when, as soon as, after, before, ऐसा लगा के I won't go out until it stops raining, ऐसा. Now present future, present simple ही है, but जब हम future meaning लगा के बोलते हैं, मैंने बोला ना कि जब आप कुछ आगे का कुछ future construction करते हो, so it can be used to talk about scheduled future events. अगर आपको कुछ events जो future आपका schedule है, fixed है, वहां use करते हैं. Things that happen according to a schedule or timetable. किसी schedule या timetable के according something is going to happen, then you are using subject plus verb plus object, present simple. These events are usually scheduled by someone else. ये किसी और के द्वारा schedule किया जाता है, and they are usually public events. Generally ये public events होते हैं. Timetables, programs कब use करेंगे हम, जब simple present tense में use करते हैं. जैसे टू डू वर्ब यूज कर रहे हैं हम, टू स्टार्ट, टू बिगिन, ठीक है. कोई चीज जैसे कि स्टार्ट करना, बिगिन करना, या फिर कुछ करना. आई लीव, यू लीव, शी लीव्स, इट लीव्स, ही लीव्स, we leave, they leave. I start, you start, he starts, she starts, it starts, they start. I begin, she begins, you begin, they begin, we begin, he she it begins. Simple, वही सेम चीज. ओके. ना टू बी वर्ब होगा, जब होगा तो क्या करना है हमको, इज एम आर लगाना. ही इज अ टीचर, यू आर अ टीचर, they are a teacher, we are a teacher, you are a teacher, I am a teacher. Okay, he is a teacher, she is a teacher, it is a bird. Subject plus verb लगाएंगे तो वो मेन वर्ब, जो हम वर्ब लगाते हैं तब. I like tea, you like tea, she likes tea, he likes tea, they like tea. Negative होगा तो he is not a teacher, she is not a teacher, you are not a teacher, they are not a teacher, I am not a teacher. तो सब्जेक्ट प्लस डू नॉट और डज नॉट प्लस वर्ब लगा के मुझे कैसे बताना, आई डू नॉट लाइक टी, शी डजंट लाइक टी, दे डू नॉट लाइक टी, वी डू नॉट लाइक टी, और वी डोंट लाइक टी, दे डोंट लाइक टी, शी डजंट लाइक टी, इट डजंट लाइक टी, निकिता डजंट लाइक टी. इंटरोगेटिव में सेम, आपका इज पहले आ जाएगा और आपका सब्जेक्ट बाद में आ जाएगा. तो इज ही अ टीचर, इज ही नॉट अ टीचर, इजंट ही अ टीचर. तो इज नॉट भी आप लगा सकते हो निगेटिव बनाने के लिए, इज नॉट ही अ टीचर, और
इज ही नॉट अ टीचर, ये भी एक तरीका है। डू और डज में कैसे यूज करोगे? डू यू लाइक टी, डू नॉट यू लाइक टी, डू नॉट यू लाइक टी, और डू यू नॉट लाइक टी। ओके, सो दिस इज द वे ऑफ यूजिंग सिंपल प्रेजेंट एंड में टू बी एंड जो वर्ब है सब्जेक्ट प्लस वर्ब उसको यूज करने का तरीका। नाइन द सेम में डू नॉट और डज नॉट जो है हम निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए और क्वेश्चन सेंटेंस बनाने के लिए यूज करते हैं। I, you, we, they do not go to the market. He or she or it does not like to play guitar. ऐसा। You do not speak English. You speak English. He speaks English. He does not speak English. यहाँ पे speaks नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये थर्ड फॉर्म वर्ब है। ये जो S है वो लूज कर देता है, मतलब S नहीं लगाना होता है। does not और do not जब हम यूज करते हैं तब, चाहे वो इंटरोगेटिव हो चाहे वो निगेटिव हो, बट जब हम पॉजिटिव बात कर रहे हैं पॉजिटिव सेंटेंस में तब हम लगाएंगे S। ठीक है। और बेस फॉर्म जो इन्फिनेटिव का होता है टू गो, टू नीड, टू स्पीक, टू लिव होता है, बट जब हम यहाँ पे वर्ब यूज करते हैं सिर्फ V1 यूज करते हैं। तो आई स्पीक, यू स्पीक इंग्लिश, ही स्पीक्स इंग्लिश। केयरफुल रहना है आपको। आई नो लिव इन जापान गलत है, आई डू नॉट लिव इन जापान सही है। ओके, शी हैज अ कैट, शी डजंट हैव अ कैट, ये भी एक चीज है कि शी डजंट के बाद हैव लगेगा, शी डजंट के साथ हैज नहीं लगेगा। ऐसे भी यूज शी हैज, ही हैज, इट हैज, बट जब हम डज नॉट लगाते हैं देन वी यूज डज नॉट हैव। ठीक है, डज नॉट के बाद ये हैव आएगा, क्योंकि हैज आपका अगेन ये आपका सिंगुलर हो जा रहा है, वो नहीं आएगा, सिंगुलर ऑलरेडी हो चुका है, डज नॉट हो चुका है, तो शी डज नॉट हैव हो जाएगा। ओके, डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन डोंट होता है, डज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन डजंट होता है। सो दिस इज वन mistake that people do. I know live in Japan. No, I do not live in Japan. She doesn't live in Japan. ऐसा. But she has a cat. She doesn't have a cat. Does she have a cat? Adverbs of frequency same है. You are always late. You usually go to the cinema on Sunday. He often cooks pasta. You often cook pasta. We sometimes order pizza. Pizza for dinner. Pizza है ये, pizza नहीं है, pizza. She hardly ever smiles. They are never at home when we call. वो हमें दे आर नेवर एट होम, वो घर पे कभी नहीं होते हैं जब भी हम कॉल करते हैं। ओके, वर्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका? वी ऑफन कुक्स पास्ता, यू आर ऑलवेज लेट, आर यू ऑलवेज लेट, डज ही ऑफन कुक। और इसमें मिस्टेक क्या है आपकी? ही इज नॉट नेवर लेट, इज नॉट भी नेगेटिव है, नेवर भी नेगेटिव है, सो द नेवर और हार्डली एवर जो है वो पॉजिटिव वर्ब के साथ लगेगा, नेगेटिव के साथ नहीं लगेगा। तो ही इज नेवर लेट, काम खत्म। ही इज नॉट लेट, ठीक है, बट ही इज नॉट नेवर लेट गलत है, सो ये गलत। दे डोंट हार्डली एवर गो टू द लाइब्रेरी, हार्डली एवर का मतलब वो क्या जाते ही नहीं है, तो डू नॉट लगाने का कोई मतलब नहीं है, ये गलत। सो दे हार्डली एवर गो टू द लाइब्रेरी, सो हार्डली एवर गो टू द लाइब्रेरी सही है। सो हार्डली एवर लगा के गो टू द लाइब्रेरी लगा देना है निगेटिव बनाने के लिए। सेम चीज फ्रीक्वेंसी के लिए कब यूज करते हैं ऐसा? आई ऑलवेज वेक अप एट 6 o'clock, आई यूजुअली कम होम आफ्टर वर्क, मैं हमेशा घर अपने काम के बाद आता हूँ यूजुअली। आई नॉर्मली स्विम आफ्टर स्कूल, मैं स्कूल के बाद नॉर्मली स्विम करता हूँ। आई ऑफन स्पेंड क्रिसमस विद फ्रेंड्स, मैं क्रिसमस जो है अपने फ्रेंड्स के साथ ऑफन स्पेंड करता हूँ, 70% चांस। आई समटाइम्स प्ले टेनिस ऑन द वीकेंड, समटाइम्स मैं कभी कभी खेलता हूँ वीकेंड पे। आई ओकेजनली ईट वियतनामीज फूड, आई ओकेजनली ईट पंजाबी फूड ऐसा। आई सेल्डम गो टू द लाइब्रेरी, मैं सेल्डम लाइब्रेरी जाता हूँ, मतलब 10% चांस है। आई रेयरली लिसन टू द रेडियो, रेयरली 5% चांस। आई नेवर लिसन टू रॉक म्यूजिक, मैं कभी भी रॉक म्यूजिक नहीं सुनता हूँ। आई नेवर ईट नॉन वेज, इस टाइप का सेंटेंस बना सकते हो। Now this is all about present simple tense uses and examples. We'll do it next time. So till then, I hope you have understood whatever I taught you. Hope to meet you in the next class. तब तक आप इसको रिवाइज करेंगे and it's your task to revise and form some sentences of your own. कुछ रीडिंग करो, कुछ लिसनिंग भी करना है आपको। After that you will good to go with present simple. कुछ और रिविजन पेजेस बाकी हैं जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। Till then, bye bye, take care.